हाय नमस्कार, वेलकम बैक। आश्रम में एक देवी भी है, पर मैं अक्सर ध्यान लेने के बारे में बात करता हूँ, पर देवी के बारे में बात नहीं करता। इट्स ओनली बिकॉज कि मेरा और देवी का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कम है। इट इज़ नॉट दैट देवी इज़ नॉट ड्राइंग मी, yes it is like that only. Devi is not drawing me because Devi is designed for certain reason and ध्यान लिगा is designed for certain reason and मेरी जो reasons हैं वो देवी उन रीज़न के लिए बनी ही नहीं। देवी जिस रीज़न के लिए बनी है ना, उस एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादा देवी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दिस इज़ व्हाट सदगुरु ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो देवी कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे तो उनको एक चीज़ का डर था कि लोग कहीं ना कहीं देवी को ज़्यादा पसंद करने लगेंगे आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज देवी इज़ मोर अबाउट मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड ध्यानलिंगा इज़ अबाउट लिबरेशन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो व्हेन देवी केम इन टू एग्जिस्टेंस हियर इन द आश्रम, तो शुरू में तो डेफिनेटली ये that was not the biggest thing in the ashram, but slowly gradually the way it is picking pace right now, the devotees, the kinds of people are coming into Devi. Sadhguru talked about it ki slowly Devi is getting more popularity than Dhyan Liga, and this is one of the fear that I had which is manifesting right now. तो मेरे लिए ऐसा नहीं था। मेरे लिए ध्यान लिंगा शुरू से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मैं काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो चुका था, तो मुझे उतना ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं होता है देवी के साथ। और देर इज़ वन मोर रीज़न, डिफरेंट रीज़न, बिकॉज ऑफ विच I do not go towards Devi, which I'll be telling it to you at the end of this video, in the later part of this video. But there is one more thing that I must tell you is that there is a significant difference between Devi's devotees and complete Dhyan Linga devotees, because Dhyan Linga devotees are like settled, stable. These are the people who are done everything. They do not want anything in rush. They just want one thing and that's it. But Devi people are like more colorful, because it's a feminine nature. More colors are there, and these people are more into this, so many things. So when you see Dhyanlinga followers, Dhyanlinga devotees, they are more into one path and very still, stable, and that has a different charm to it. Devi's devotees are colorful. They are like, they can do argument with you. They can snatch things from you, because that is what materialistic world. That is how materialistic world work. Like there is one thing. If somebody whoever takes it, it becomes there. So that is how things work, right? So Devi put grace on these people so much. Like Devi is like putting grace like anything, because that's the nature of your mother. When you go and ask something to your father might not give you, but what your mother does is she will just steal some amount of money and buy that thing for you, and it will give to you. She will give to you irrespective of the fact that it is good for you or not. But whatever you wish, your mother is always feels like she could fulfill it. So that is what mother does, that is what Devi does. तो जब भी आप दिमाग में कोई भी चीज़ रखते हो ना, तो हमेशा ट्राई करना है कि ये चीज़ अच्छा ही हो, क्योंकि देवी जो ग्रेस करती है ना वो इनडिस्क्रिमिनेट होती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई मैं देवी के पास नहीं जाता, बिकॉज मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो चीज़ें हैं ना कहीं मैं अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें सोचता हूँ ना, देन इट विल ओवरबर्डन, उसमें भी ग्रेस मिल जाएगा मुझे। तो जनरली देवी को कहा जाता है कि देवी इज़ अ गॉडेस हु कैन remove all the compulsions of you. There is two ways to remove any compulsions, okay? One is keep you out of that compulsion, और second is overload with that compulsions. For example, अगर आपको एक मिठाई खाना पसंद है तो आपको मिठाई दिया ही ना जाए तो वो compulsion खत्म हो जाएगा एक समय के बाद, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिठाई दे दिया जाए तो भी compulsion खत्म हो जाए। देवी का पार्ट 2 है। देवी will just give you grace like anything. She will just overload with you grace and she will just give you everything that you want. And after a certain point of time you will feel ki I think this doesn't matter, so over the time this compulsion goes away. So that is what the way of Devi. She is very generous, she is very kind, she is very loving, but she also needs love from your side. You cannot be loving one day and hateful one day. You cannot mess with Devi, okay? You can mess with Dhyanlinga, you can mess with the masculine energy of the existence, because if we talk about Shiva और पार्वती, शिवा को आप इरिटेट करा नहीं सकते, वो वैसे बैठे रहेंगे, आप कुछ भी करो उनके साथ, ही विल बी जस्ट बी लाइक दैट, स्टिल स्टेबल एंड सिटिंग इन अ समाधि. Devi on the other hand, agar if you try to mess with him, if you are being loving to her, she will be giving you everything like a son, she will be treating you. But if you just mess with her, then there is no time, she cannot become Kali. If she becomes Kali, she will just chop off the head and
She will not let a single blood will fall on the ground and drink it all, suck all the blood out of the body. So the feminine energy, feminine aspect of the life, this existence is more, you know, towards giving you grace, more loving, more joyful, more colorful. It has one charm to it, but when it comes to how it matters to your life, it depends upon you कि how you are approaching towards it. अगर आप ना एक loving life approach करते हो, एक joyful colorful life आप approach करते हो तो सही है, पर अगर आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, ख़राब गुण हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं आपको लगता है कि ये एक्चुअली सही नहीं है बट स्टिल यू आर हैविंग इट, तो इसमें भी आपको ग्रेस मिल जाएगा. तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न वाई बिकॉज ऑफ विच आई डू नॉट गो टू देवी, बिकॉज वन ऑफ द रीज़न दैट आई स्केर्ड ऑफ देवी अ लॉट, बिकॉज व्हेन शी बिकम्स काली शी डजंट सी एनीबॉडी. सो ऐसा भी है कि देवी यंत्रा भी जो यहाँ पे सदगुरु देते हैं किसी इंसान को, तो अक्सर बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है कि इट इज़ द विल ऑफ द देवी टू गो टू व्हिच एवर प्लेस. तो देयर वाज वन फैमिली जो कि काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे देवी यंत्र लेने के लिए. उनके वो वेल्दी फैमिली था, उनके पास पैसे थे, एवरीथिंग उनके पास था, बट स्टिल 4-5 साल से वो ले ही नहीं पा रहे थे. बट उसके बाद फाइनली उन्होंने लिया. सो समवेयर देवी ओनली डिसाइड्स कि कहाँ पे मुझे जाना है. बट स्टिल एज आई ऑलरेडी मेंशन, देवी यंत्र इज़ अ मेटल एस्पेक्ट ऑफ इट. ये एक यंत्र है, आप इसको उठा के लेके जा सकते हो. If you do that kind of a mistake in your life, then they will just mess your life. Because the kind of grace that she is providing, you have to understand that कि अगर मेरा intention सही नहीं है तो this is going to become a karma to you and will be coming back to you in a different form or harder way. So your life is going to be mess with Devi's energy. So it is best that you focus your intentions and your mind before going to Devi. फिजिकल एस्पेक्ट को भी कहीं लेके जाते हो, किसी भी एनर्जी फॉर्म, मैस्कुलिन एनर्जी फॉर्म को आप लेके जाते हो ना, तो उसमें भी जो मैस्कुलिन एनर्जी फॉर्म होते हैं वो आपको उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, एंड इट इज़ more likely to be still and stable. So slowly gradually it will just going to give you a little bit support for you to grow in the spiritual aspect. But when it comes to feminine, it just give you push like boom. So जब भी आप देखोगे occult practitioner जब होते हैं ना, तो हमेशा वो देवी को प्रीफर करते हैं instead of preferring any feminine like masculine aspect of the energy system. तो हमेशा वो देवी को प्रीफर करते हैं, हमेशा वो फेमिनिन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि देवी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि ये इंसान गलत कर रहा है, ये इंसान ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहा है, ये इंसान काला जादू कर रहा है. नहीं, तो देवी हमेशा ग्रेस सबको दे देती है. सो दैट इज़ वाई दे आर प्रिफरिंग देवी मोर. और दिस पीपल आर हु आर डूइंग एनी काइंड ऑफ काला जादू और ऑकल्ट प्रैक्टिस, यू नो, दे आर कंप्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स देवी. सो देवी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ओवर. हमारे ओडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग सच स्टोरी है जहाँ पे लक्ष्मी एक बार ना एक चंडालुनी के घर जाती है. चंडालुनी मीन्स लोअर कास्ट काइंड ऑफ पर्सन जिसके घर जाती है, बिकॉज सी कॉल्स हर. सो व्हेन सी गोज टू दिस चंडालुनी's हाउस, later her husband and brother-in-law, they do not like it. तो they say कि you went to Chandalini's house, this lower caste house, now you should not come inside our house. So she says okay, and then she leaves the home. And you must understand, when Lakshmi leaves the home, what happens to your life? They do not get to eat a single food. They say the story is for 12 years it happened that they did not get to eat anything. Even if you reduce it down to 12 months or 12 days even, this is too much, right? So they did not get even a single thing. So whenever they go to ask Viksha, because they are Brahmins, so they can ask Viksha. So when they ask Viksha, whenever somebody is trying to offer something, it will either get blown away by the wind, or something will happen that they cannot eat, it will just fall off. And if there is a water in the pot, suddenly it was full, but when they go, water is just gone. So when Lakshmi leaves your house, you know what happens. So that is what happens. So Lakshmi, or the feminine aspect of the life, is much more it's like it gives you much more grace into your life. But only thing that you have to understand is that you cannot upset Devi. So you always have to keep loving, and the simple love, simple devotion that you have within yourself towards Devi is going to grace you in a different way. And again, I have seen that people are fighting and snatching in the Devi temple, but in Dhyanlinga they are quite more stable and settled. But there are people who are doing seva in both these aspects. But it is more like towards which way you are drawn. But
whichever way you are, it is completely fine. This is the way of life, that the karma that we have already done in the past, the karma that we are doing, based on which our life is getting shaped. तो जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अभी कर रहे हो ना, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और मुझे क्या एग्जैक्टली चाहिए. और बेस्ड ऑन दैट यू कैन गो टूवर्ड्स दिस एनर्जी सिस्टम टू गेट द ग्रेस, बिकॉज what grace does is it just it acts like a catalyst in your life, so it just push you a little forward to your the journey, the direction that you are moving towards in. So that is what I wanted to, that is what I actually felt very excited, because recently I've been working in, or I have my seva is in Devi temples. I have been seeing so many things, and that is why I thought, let's make a video on that. So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.